इसको। अब सही। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कुछ पूछना हुआ तो हम उसका हाथ से रिवाइंड कर लेंगे। As we were discussing in this picture, we can see that the conjunctival vessels, they're more or less normal. And the engorged vessels, these are deeper to the conjunctival tissue. So now, how will we differentiate between scleritis and episcleritis? Scleritis में pain movement वाला भी होता है ना कुछ vessels का। ठीक है, someone is saying that pain ज़्यादा होती है, that is correct. Movement, I'm not sure कि movement ज़्यादा होती है, not wrong. But the main thing that in clinical scenarios, when we're discussing scleritis specifically, आपको एक तो you will have a classical profile of a patient. If that is not given, you will be told that there's an autoimmune disease being treated, because in 50% of cases, scleritis is associated with an ongoing autoimmune condition, which can either be SLE, it can be spondylothic arthritis, it can be rheumatoid arthritis, or it can be any autoimmune disease. That is an important association because 50% of the cases of scleritis have an autoimmune disease. Number one. Number two, scleritis is a deeper inflammation than episcleritis, because episcleritis is a confined inflammation between the subconjunctival and episcleral tissue, which is deep to the subconjunctiva. So, if in this deep inflammation, we will get both uveal symptoms and corneal symptoms. Okay. Which means that we will also have symptoms of, let's say, photophobia. We will have immense pain. We will have foreign bodies, sensation or discharge. We can have discharge even if the cornea is infected. Sorry, not discharge. We can have lacrimation or tearing if the cornea is affected. On examination, we might even see hypopyon, etc. That is scleritis. Now, क्योंकि scleritis की symptoms काफी vague से हैं और episcleritis और scleritis को आपस में करना काफी confusing हो जाता है. So it's not something that is regularly or routinely tested in the cough. लेकिन आपको जो चीजें आनी चाहिए ना scleritis की, you have to know that it is a deeper inflammation. It involves the deepest tissue, and it can appear with symptoms of uvea and cornea, along with symptoms of acute onset redness and mild to severe pain in both eyes. इसमें जो important चीज़ है, हमने कहा कि 50% association with systemic autoimmune diseases इसमें होती है. So when we are discussing this patient, तो symptoms आपको कह दिए, इसको कह लेते हैं. What investigations you will do? What are the investigations we will do? ANA वगैरह. Exactly. It is autoimmune. ANA. Number two. एक टेस्ट लिखा था phenylephrine test. Phenylephrine test. Phenylephrine test क्यों कहते हैं? वो vessels को blanch करने वाला कुछ था. Episcleritis हो तो vessels blanch हो जाती हैं. बिल्कुल, exactly. और अगर
और अगर Chloritis ना हो तो हाँ. चलो phenylephrine test बस एग्जामिनेशन में हम कहते होते हैं, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन. हाँ examination. हाँ, it's not. चलो लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वेसल्स ब्रांच हो जाती हैं. phenylephrine टेस्ट, चलो हम और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक टेस्ट होता है आर फैक्टर का. अरे एग्जैक्टली आर फैक्टर. बताओ सारे टेस्ट बताओ जो भी जेन में आता है. सब कुछ बोल दो, सब कुछ बोलो, सब कुछ बोलो. कौन से टेस्ट कराना चाहिए? सीबीसी. चलो CBC. और anti-DNA antibodies. एंटी-डीएनए और ब्लड के अलावा टेस्ट और बताओ. एंटी-डीएनए और अच्छा that के अलावा ब्लड के अलावा भी सोचो. ठीक है, चलो मैं एक बता देता हूँ. चेस्ट एक्सरे और हाँ इसमें तो फिर बहुत सारी टेस्ट हैं. टीबी का टेस्ट हो सकता है. टीबी का टेस्ट कर लेंगे. क्योंकि मुझे लगता है मैंने पहले गलत चीज आपको बता दी है. I think I said it's autoimmune diseases. इसकी association होती है with systemic diseases which can be autoimmune or otherwise. So I'm sorry, वो मुझे लगता है मैंने आपको गलत बता दिया. मुझे भी खुद याद आ रहा है कि yes, it is associated with autoimmune diseases, but it is also associated with systemic diseases as well. Sclera and Montu. और हम क्या कर सकते हैं? और angiotensin converting enzyme का टेस्ट कर सकते हैं. मुझे याद नहीं आ रहा कि रीचेक एस. सो यू सेइंग रीचेक एस. व्हाई डू वी चेक एंजियोटेंसिन? एस हम करते हैं sarcoidosis के लिए. सार्कोइडोसिस. इसको फिर मैं एक और चीज के साथ लिख देता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्यों लिखा था. नेक्स्ट एक और एक्सरे होता है. One more X-ray. Spine X-ray. One more. X-ray spine. Spine X-ray. और चलो इतना काफी है अगर कर लेते हैं. तो why do we do these things? Number one, हम स्टार्ट करते हैं. ये टेस्ट कराना क्यों जरूरी है? ANA is for autoimmune disorders. ANA is for autoimmune disorders. Phenylephrine is it's not just it's an examination. वो हमने कर ली. RA factor is for रूमेटॉइड arthritis. ठीक है. CBC I'm not sure CBC specific से कहते हैं. I will check it. Anti-DNA it's specific for lupus. उसके अलावा anti-Smith, anti-DNA, lupus, anticoagulant. Now chest X-ray is done for two things. It's done for sarcoidosis and it's done for TB as well, tuberculosis as well. So chest X-ray and angiotensin converting enzyme levels we do for sarcoidosis. IGRA, interferon gamma release assay, and Montel's test we can do for TB. Spine X-ray for spondylosing arthritis, ankylosing spondylitis. These मतलब ये हैं कुछ diseases जो आप पैथो में आगे पढ़ेंगे, specifically affect the spine or the axial skeleton. One of which is ankylosing spondylitis. उसके लिए हम चेक करने के लिए diagnosis made on X-ray. उसके साथ भी scleritis की association है. Now, these are the important investigations which we have to remember we will do in every case of scleritis. And UVI भी जब हम discuss करेंगे तो UVI की भी general investigations ऐसी ही हैं. They are more or less the same. जब हम uveitis की investigations और scleritis की investigations करेंगे तो you have to do all of these. Why? Because this disease is associated 50% of the times with systemic diseases. Systemic disease. ठीक है.
Now, what are the types of scleritis? Scleritis is conventionally divided into anterior scleritis and posterior scleritis. Posterior. Now, posterior की हम such examination नहीं कर सकते हैं. उसके symptoms जो appear होते हैं, they appear on the inside the choroid and they have retinal symptoms. तो वो they're not necessarily clinically and exam wise as well. They're not for our level. Now, when we're discussing anterior scleritis, we can have this diffuse anterior scleritis. Why is this diffuse? Because nodule तो कोई नहीं है. Nodule भी कोई नहीं है, and the vessels they're diffusely affected. These scleral vessels, these are deeper vessels and they're diffusely affected, and there is no nodular form. Now, one we have diffuse, the second is nodular, and there's also a third type, which is given in this picture. Yes. This is necrotizing scleritis. Necrotizing. Necrotizing scleritis, exactly. This is necrotizing scleritis. Why is this called necrotizing scleritis? आपको भी नजर आ रही है screen? Yes. Yes. ठीक है. There is something on the screen. इसी picture में there is something on which gives away this is why this is called necrotizing scleritis. जिसको क्यों हम कहते हैं necrotizing scleritis? Appearance से. Yes. नहीं, why is the word necrotizing used? Dead cell accumulation. How can we see dead cell accumulation? Black area. First जमा हो जाती है ना? First जमा हो जाती है. बस. Here. ठीक है. This purulent pus material. Now, this blackish, आपने सही कहा, this blackish is also involved. इस picture में काफी कुछ हो रहा है. Exactly. You can see that there are vessels inside the cornea. Cornea pastry भी आ रही है. These are deep vessels, invasion भी हो रही है. And now, this blackening is actually beginning of the sclera over there. इसको scleromalacia कहते हैं. उसकी वजह से deeper vessels नजर आ रही है. Now, similarly, we said that this is necrotizing scleritis. Now, out of the three types, we have discussed three types of scleritis: necrotizing scleritis, nodular, and diffuse. Now, necrotizing scleritis has two further subtypes, given in these two pictures. This is the picture of one subtype, and this is the picture of the other subtype. Okay, what difference can you see between these two pictures? Inflammation. क्या Pus. ठीक है. blackening, no, the blackening because of the light वो आपको ऐसे लग रहा है ना blackening. ठीक है. what else? There's a significant difference जो हम थोड़ा सा examination we can sort of appreciate. Pus नहीं है ना second वाले में. पस नहीं है. ठीक है. बिल्कुल पस नहीं है. So उसी पे हम build कहते हैं. redness भी नहीं है. exactly. Inflammation मतलब. Inflammation, बिल्कुल. So the first type of scleritis, it is necrotizing scleritis with inflammation. Second is necrotizing scleritis without inflammation. Okay. ठीक है. तो one हमने कहा एक inflammation के साथ है, and the second is without inflammation. What should be the symptoms? What should be a difference in symptoms if there is any? Pain. Exactly. So now in necrotizing scleritis with inflammation, there is going to be a painful red eye with these symptoms. Necrotizing scleritis without inflammation, we will have more or less the symptoms of scleritis, thinning of the sclera without any pain. It is going to be painless. Okay. So this was a brief overview of the sclera, जिसमें आपको जो चीजें याद रखनी हैं वो है episcleritis, the two types of episcleritis. It is presenting complaints. Diffuse anterior scleritis, nodular, I couldn't find a picture. So nodular anterior scleritis and necrotizing scleritis, and the difference in symptoms. Now, this scleritis, how will you treat scleritis? Steroids. Sir, self-limiting.
ठीक है, number one, someone said steroids, and I heard other thing also. Self-limiting, ठीक है, self-limiting हो गया. और सिस्टमिक कॉज है उसको ट्रीट करेंगे. systemic cause है, इसको ट्रीट करेंगे. और सही बता रहे हो, कुछ सही बता रहे हो. NSAIDs, that's good. Inflammation, NSAIDs देंगे. एक और, there is also one more class of drugs. Vasoconstrictors. Vasoconstrictors. चलो, someone also said vasoconstrictors. और I'm looking for one specific class. NSAIDs आपने कह दिया. Inflammation की बात करें, these are NSAIDs, corticosteroids, and after that there's another class. DMARDs. DMARDs, exactly. Now, disease-modifying anti-rheumatic. Anti-rheumatic. Yes. Some specifically will not call them DMARDs. The class which we are going to use, we will call them immunosuppressive agents. Okay, DMARDs आ सकते हैं, but DMARDs का जो function है वो rheumatic diseases में आता है. We will not call these DMARDs. So that is the treatment in scleritis. That we will have, number one, we will use NSAIDs, nodular diffuse scleritis. Number two, we will give steroids. Number three, if not resolve the issue, we will go with immunosuppressive agents. Which immunosuppressive agents? क्या ज़हन में आता है? Cyclosporine. और Azathioprine. Azathioprine, exactly. ठीक है. So this is our treatment. Now, ये तो हमारी हो गई classes of drugs. किस तरह हम? What will be our route of administration? Systemic. Systemic. ठीक है. और Topical. Steroids दे सकते हैं. ठीक है. Topical steroids भी दे सकते हैं. और Conjunctival injections. conjunctival infections. ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था. आखिरी क्या बोला आपने? दोबारा आप एक बार बोलना. Subconjunctival injections. Conjunctival injections. ठीक है. ठीक है. Subsequent conjunctival injections देंगे. अच्छा, subconjunctival injections नहीं देंगे. We will not inject antibiotics locally. क्यों नहीं करेंगे? Sorry, steroids locally. Cataract. नहीं. It's not due to cataract. This is a disease-specific complication or a contraindication. हम सिस्टेमिक चीज को ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही सिस्टेमिक है. ठीक है, that's a good thing, but that's वो तो फिर indication आ गई ना. I'm saying why are injectable steroids, local injectables, subconjunctival or anything like that? Healing को compare कर देंगे. चलो और एक और think सही, आप करीब पहुंच रहे हो. Infections का risk ज़्यादा बढ़ता ठीक है, हमने भी बता दिया कि scleritis is ठीक है, glaucoma. और I'm saying it's not drug specific contraindication. आप लोग drug specific contraindications पे जा रहे हो, steroids के side effects पे. I'm saying it's a disease specific. Scleritis में there is inflammation of the sclera, and as we can see in this picture and this also, the sclera is thin. So if we try to inject steroids either intravitreally or subconjunctivally, there's a risk of globe rupture. Again, that is why injectable steroids, I mean injectable meaning intravitreal injections or subconjunctival injections, they are contraindicated. हम इनमें inject नहीं करेंगे because they can cause rupture of the sclera. Rupture of the sclera इसी केस में रप्चर क्यों होगा? मतलब वैसे तो हम करते हैं इंट्राविट्रियल वगैरह. बिल्कुल करते हैं. thinned out है ना. Thinned out है, exactly. जब sclera की inflammation हो रही है in necrotizing scleritis, much less in diffuse scleritis, लेकिन in necrotizing scleritis or in scleritis associated with other disease, if there is considerable thinning of the sclera, as you can see in this picture, ठीक है, white होता है ना sclera. If the sclera is not white, we can see through, and what we see through is the underlying tissue, the retina, uvea and the retina, exactly. So
the globe is considerably weak. Now, if we were to puncture a hole in this globe, what would happen? It can rupture. Injury. हाँ, बिल्कुल rupture कह सकते हैं ना. Now, in other cases, हम जब injections देते हैं, for example, in endophthalmitis, the sclera is all right. सही होता है ना sclera, या खराब हो जाता है अभी? सही होता है. सही होता है. सही होता है ना, ठीक है. Now, sclera is the pain coat which provides structure to the eye. और जब वही उसमें disease आ जाए और हो जाए, तो फिर हम जब कोई भी चीज करेंगे, if we try to penetrate the sclera at all, it can lead to a rupture of the bone. ठीक है, उस वजह से. और local steroids इसमें ineffective होते हैं. क्यों ineffective होते हैं? Because क्योंकि वो reach ही नहीं करेंगे. बिल्कुल penetration is not good. ठीक है, तो हमने दो modalities हमने खत्म कर दी. We will not topical ineffective, and subconjunctival cannot be given because of a fear of globe rupture. So we will these drugs, they will be given systemically, NSAIDs, steroids and immunosuppressive agents. ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और फिर हम इसको फिनिश करते हैं. नंबर वन इज अनदर केस. वो सिर्फ केस है क्योंकि इट्स एमसीक्यूज में आता है. इट डज नॉट कम इन क्लिनिकल सिनेरियो. क्वेश्चन इसका नहीं होता. ये आप बता सकते हो मुझे, आई थिंक मुझे लगता है मुझे बता सकते हो कि आप लोग पैथो में नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ाओ. ठीक है, देयर इज अ चाइल्ड, सिंपल नाम रखते हैं इसको, सिनेरियो नहीं बनाऊंगा मैं, सिंपल बता रहा हूँ. देयर इज अ चाइल्ड, with a newborn child or a 5-year-old child. With bilateral deafness, history of deafness. History of deafness. He has frequent fractures and his eyes are blue. His sclera are blue. What is this disease? जिसको आता है वो नहीं बोलेगा. तुक्के मारो, मुझे हर कोई बंदा एक तुक्का मारता है, सुनाई दे. Come on guys, सोचो. Osteogenesis imperfecta. अब्दुल्ला को आता था, मैंने कहा था जिसको आता नहीं आता उसने बोलना नहीं है. चलो, this is osteogenesis imperfecta. ठीक है, ये अब ऐसा केस है जो जिसका एमसीक्यू आई में भी आता है, आ जाता होता है. इसका एमसीक्यू ईएनटी में भी आता है और इसका एमसीक्यू पैथो में भी आता है, क्योंकि इसके तीनों के सिम्टम्स हैं. हिस्ट्री ऑफ डेफनेस व्हिच इज सेंसरी न्यूरोनल डेफनेस. ईएनटी में आपको ये क्वेश्चन आता है तो देयर विल बी सेंसरी न्यूरोनल डेफनेस गिवन इन द क्वेश्चन स्टेम. द सेकंड इज फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स, व्हिच इज अ पैथोलॉजी में इस पे फोकस होता है. स्क्लेरा आर ब्लू. दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस. ठीक हो गया? तो उसके बाद ये है कि स्टेफिलोमास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करने की, क्लिनिकल केसेस या सिनेरियोस नहीं आते. क्वेश्चन आपको प्रॉफ में एसक्यू नहीं आएगा. हाउएवर अगर एसक्यू आता है, वो एमसीक्यू में जो पॉइंट्स हैं वो पूछे उन्हीं पे आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेफिलोमा एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट स्टेफिलोमा. तो सिंस देयर इजंट अ केस, मैंने वो तैयार कोई इसका मुझे मटेरियल है नहीं क्योंकि केस आता नहीं और ना उसकी एग्जामिनेशन की पिक्चर है. इफ यू कैन, अगर आप कहते हो तो वो हम उसका बुक के अंदर दिया हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं चीजें. आज का सेशन इधर खत्म करते हैं. कहाँ पे लिखा हुआ है स्टेफिलोमा? क्योंकि जितोई में तो नहीं था. जोगी में डिफरेंट सेक्शंस में लिखा हुआ है. जोगी के अंदर, क्योंकि मैंने जोगी पढ़ी है, जोगी के अंदर वो स्क्लेरा के अंदर आखिर में दिया. और जितोई में आई थिंक जो रेलेवेंट एरियाज हैं उनके अंदर दिया हुआ है. जैसे एंटीरियर स्टेफिलोमा, इट इज मोर कॉमन इन कॉर्नियल, मोर कॉमन कैट ऑकर्स इन कॉर्नियल अल्सर्स आफ्टर परफोरेशंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर्स, तो वहां पे दिया हुआ है. पोस्टीरियर स्टेफिलोमा इज गिवन अराउंड द रेटिना, क्योंकि रेटिना में भी जोगी में दिया हुआ है. एक जगह जोगी में सारे डिस्कस होंगे. जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेफिलोमा. ठीक है, स्टेफिलोमा इज outer coat ectasia with incarceration of uveal tissue. ठीक है, ectasia of the sclera. Ectasia means there's मतलब बढ़ जाता है. I'm not sure मैं properly explain कर सकता हूँ.
but it means a ballooning out of the outer coat. ठीक है? For example, a keratoconus is also an ectasia. जिसमें outer coat balloon out हो रहा है. So it's an ectasia of the sclera with incarceration of the uveal tissue, meaning that the uveal tissue is trapped. Now, depending upon the location of the ectasia or the ballooning out and which uveal tissue is involved, if the iris is involved, if the ciliary body is involved, is the base of the ciliary body involved, is the choroid involved, the staphloma is divided into anterior, ciliary, intercalary, equilateral, equatorial and posterior staphloma. ये इसकी टाइप्स हैं. Okay. ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो. अगर आप कहते हो कि डिस्कस करें तो कर लेते हैं. Other than that, questions क्या थे? आज questions आपने एक दो पूछे थे. Does anybody have any other questions? वो भी आप बता दो. आपने से किसी ने पूछा था कि if antibiotics are continued during syringing and probing, ठीक है? Yeah. और कोई question? If does anybody else have any question? कुछ ना समझ आया उसमें कि पढ़ना क्या है, किस तरह करना है, या ओवरऑल कुछ भी? चलो ठीक है. इस क्वेश्चन पूछें. कंजक्टिवल वेसल्स है या एपिस्क्लेरल वेसल्स है, ये कैसे पता लगेगा? मतलब जैसे ब्रांचिंग, phenylephrine टेस्ट. सही. ठीक है. एक तो क्लिनिकल, मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसकी ना क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना और जो पिक्चर्स हैं वो कभी कभी ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जिस तरह अभी आप ये देखोगे तो ये हो सकता है, मैं फर्स्ट क्लास में मैंने भी पहली बार देखा था अथॉरिटीज कंजक्टाइवल वेसल्स. थोड़ा फर्दर एग्जामिनेशन हमें समझ आ जाती है कि these are not as large as the conjunctival vessels. ठीक है? They are more reddish in appearance. They are deeper in nature, and secondly, they will not blanch to phenylephrine. Okay, these are the things which separate conjunctival vessels from the episcleral or the scleral vessels. अब इसी तरह in the previous case, in this case we can clearly see the conjunctival vessels, okay, above the diffuse redness.